press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second chapter of 10th Maharashtra State Board History. The second chapter is Historiography, Indian Tradition. So in the first chapter, we have studied about the Western tradition of historiography, how Western thinkers or Western historians are writing history. So in this chapter, we will study about Indian tradition of writing history, or who were the important historians in India and how Indian history has been written. See, as you know, historiography whenever we are studying history, so we need some facts or we need to verify some facts. Whenever we are getting some inscriptions or we are getting some records, historical records, we have to critically analyze that record, and after that we have to come to a conclusion. So in this chapter or in this second chapter, we will study about Indian way of studying history. So let us begin with the chapter. See, Indian history is divided into three parts. It is ancient history, medieval history, and modern history. So we will see how ancient history was studied, how modern history was studied, and how medieval history was studied. So in this first part, we will study about ancient history. So tradition of Indian historiography. See, we have learned about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. The historiography in the ancient period. So first, we will talk about ancient India. In the ancient period of Indian memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals. Oral recitals means poem or stories. So हमारे जो एंसिस्टर्स के बारे में या हमारे जो माइथोलॉजिकल लोर है, जैसे हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, गॉड के बारे में स्टोरीज है, ये या भी जो भी हमारे पोएम्स है, ये हमने ओरल रिसाइटल्स के तौर पे प्रिजर्व करके रखे. सो वी आर प्रिजर्विंग दिस स्टोरीज and our ancestors are passing these stories to a next generation. So generation to generation, we are preserving these stories. There was no written information available, so we are preserving them through oral means. So we are making poems or we are having some stories. Our grandparents are telling us the stories. Then we are passing that knowledge from generation to generation. The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm the Indians had mastered the art of writing as early in 3rd millennium before common era. So हरप्पन सिविलाइजेशन या हरप्पा के जो सील्स मिले, हरप्पा में जो रिकॉर्ड्स मिले, जो लैंड जो स्टोन पे जो सील्स बनाए थे वो मिले, उसके बाद हमें पता चला कि इंडियंस जो हरप्पन सिविलाइजेशन इट इज़ फ्रॉम 3rd मिलियनियम BCE, 3rd मिलियनियम बिफोर कॉमन era. तो इतना पुराना हमारे पास रिकॉर्ड मिला कि इंडियंस को लिखने के लिए भी आता था. सो इंडियंस कुड ऑल्सो राइट एंड दे हैव प्रिजर्व देयर हिस्ट्री. बट देर आर सम थिंग्स ऑफ दैट हरप्पन सिविलाइजेशन दैट कैन नॉट बी डिकोडेड येट. हमने अब तक उसको डिकोड नहीं किया है. क्या लिखा है वो अब तक पता नहीं है वर्ल्ड में किसी को. सो आफ्टर दैट इट विल बी डिकोडेड, देन वी विल स्टडी मोर अबाउट इंडियन हिस्ट्री. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Deciphered का मीनिंग होता है डिकोडेड. ये जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, ये जो सील्स पे लिखा होता है या फिर स्टोन्स पे कार्विंग करके लिखा होता है, ये पुराने कोई स्क्रिप्ट्स में लिखा होता है. वी डोंट नो दैट स्क्रिप्ट्स. हिस्टोरियंस आर स्टडिंग अबाउट दैट स्क्रिप्ट्स, बट टिल नाउ वी हैव नॉट येट डिकोडेड दैट. 100% हमने पूरा डिकोड नहीं किया है. क्या लिखा है किसी को पता नहीं है. सो इट इज येट टू बी डिसाइफर्ड. डिसाइफर्ड मीन्स डिकोडेड. पूरा रीड कर पाए ऐसा अब तक नहीं हुआ है. इट विल टेक टाइम. The earliest known written documents of historical nature found in India are form of inscriptions. So last time we have studied about inscription. Inscription are just like carving और stones पे या कोई cave में जाके जब भी हम कुछ लिखते हैं या paintings बनाते हैं, ओके, या फिर stones में carving करते हैं, these are inscriptions. They are dated to 3rd century BCE, 3rd century before common era, या पहले जो BC बोलते थे before Christ. तो 3rd century BCE इतना पुराना records है. दैट इज एम्परर अशोका मौर्याज टाइम्स. सो अशोका मौर्य टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये लास्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स है इंडिया के बारे में. हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स. सो अशोका का जो अशोका स्तंभ है या फिर जैसे जो स्टोन रॉक्स पे इंस्क्राइब करके रखा हुआ है, रॉक पे कार्विंग करके रखा हुआ है, दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डिसाइफर्ड या डिकोडेड. फ्रॉम द First century CE means common era or AD, first AD. Inscriptions began to occur on coins, metal images, sculptures and also on copper plates. So now
we can see now in the ancient time they were writing on stones. Now as we are studying about 1st century CE or 1st century AD, now we can understand that these people living in that era could also have also discovered coins and metal images. So now they have found it, they have discovered metals, and now they are writing on the metals or they are carving on the metals. So now we can understand whenever we are studying about this documents, जब भी हमें ये coins या फिर जो inscriptions मिलता है तो हमें transition पता लगता है कि पहले लोगों को क्या आता था, अभी लोगों में कैसा advancement हो गया या development हो गया. So this is also an indication of development. Coins, metal images, sculptures, and also on copper plates. They provide important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynastic genealogies, territorial extent, and administration of various empires. See, whenever we are studying about, whenever we are getting these coins or inscriptions, first thing we are doing is we are checking its age. हम एक कार्बन डेटिंग करते हैं और उसका एज पता लगाते हैं. एज पता लगने के बाद हमें पता चलता है कि कौन से किंग ने ये पब्लिश किया था. सो वी कैन अंडरस्टैंड what kind of development was done in the era of king or in the king's kingdom. So first we will know about the various kings. Then dynastic genealogies. Dynastic genealogies ka meaning, what is the meaning of dynastic genealogies? Genealogy means after one generation, next generation is coming. So continuation, it is like a event, chronological event. कि उनका chronology है. If you take example of Mughal history, so Babur, after Babur, Humayun, then after Humayun, Akbar. सो ऐसे उनके जो एंसिस्टर्स थे, या बाबर के बाद हुमायूं का किंगडम आया, हुमायूं के बाद अकबर का मुगल एम्परर बन गया. सो आफ्टर सीइंग दिस जीनियोलॉजी, सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट जीनियोलॉजी, तो हमें रिकॉर्ड्स मिलना चाहिए कि इसमें रिकॉर्ड्स में लिखा होता है, राजा के नाम के बारे में लिखा होता है या राजा के किंगडम के बारे में लिखा होता है. सो while reading this documents, we come to know about the genealogy or how the kingdom has evolved. See, if you talk about Maratha history, so first king was Chhatrapati Shivaji Maharaj. So after Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj became the king, and after Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj. So we can see, हमें जब भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो हमें पता लगता है कि जीनियोलॉजी कैसा है किंगडम का. सो हु वाज द फर्स्ट किंग, आफ्टर दैट हु बिकेम द किंग, आफ्टर दैट हु बिकेम द किंग. सो दैट इज डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज. डायनेस्टी का मीनिंग होता है कि ये घराना, जैसे राज घराना होता है कि उसके बाद पहला राजा बनता है, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है, उसके बाद उसका बेटा या उसका छोटा भाई बनेगा. सो दिस इज द डायनेस्टिक जीनियोलॉजी दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल. देन टेरिटोरियल एक्सटेंट. टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कितना बड़ा किंगडम था किंग का, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें इंस्क्राइब करके रखा होता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, हाउ वाज द किंग रूलिंग, वाज द किंग गुड, वाज द किंग बैड, दैट कैन बी सीन फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शंस. एंड किंगडम ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, social organizations, climate, famine, etc. of respective times. So we can study about this. We can study about the famine. Famine मतलब सूखा, जब भी खाने की कमी होती है. ड्रॉट का मीनिंग होता है जब भी पानी का कमी होता है. सो खाने का कमी होगा तो famine. So we can study about this. See, there is one inscription that was found, that is Sohagaura copper plate. The copper plate was found at Sohagaura in Gorakhpur. Gorakhpur is in Uttar Pradesh. So वहाँ ये डॉक्यूमेंट मिला. So from this document we can see there is one place, it is like a storage room. So इस storage room को देख के हमें पता लगता है कि इसमें food grains को store करके रखते थे. So in future when there will be famine situation, so we can use that food grains. So from looking at this we can see that there was good administration in this kingdom. So ये kingdom में अच्छा administration था. So इसमें हमें पता लगता है कि इसमें king लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था, वहाँ food grains store करके रखा था. अगर crisis situation आया तो ये फूड ग्रेन्स वहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो दिस कैन बी सीन एज अ साइन ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज सपोज टू बी द फॉर्म ऑफ मौर्यन पीरियड. सो इट इज फ्रॉम मौर्यन पीरियड. द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. सो दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट होता है या रोमन स्क्रिप्ट, इंग्लिश स्क्रिप्ट. दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द सिंबल नोन एज ट्री इज रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑकर्स ऑन पंच मार्क कॉइन्स. ये जो सिंबल्स है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पंच मार्क कॉइन्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम मौर्यन पीरियड. Another symbol which looks like a structure of erected 4 pillars is supposed to be a granary. Granary means where the grains are stored. So this is like a granary. It is indicative of granary. The inscriptions records the royal order
दैट ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली. सो रॉयल ऑर्डर मतलब किंग का ऑर्डर है कि ये जो ग्रेन्स है ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सो दैट पुअर पीपल कैन ऑल्सो गेट ग्रेन्स इन द क्राइसिस सिचुएशन. इट इज सपोज टू बी सजेशंस टेकन इन द टाइम ऑफ फमाइन. सो जब भी फमाइन होगा तो ये प्रिकॉशंस लिया है किंग ने कि जब भी खाने का कमी होगा तो किंगडम डिस्ट्रीब्यूट करेगा. और इट इज बाय लुकिंग एट दिस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग. This is Brahmi script. This is deciphered by the historians. So historians are studying about this script, and after studying, we can understand what was the history of that time, or what was the administration of the king at that time. The writing of biographies of king. Biographies का meaning होता है king के बारे में पूरा information लिखते हैं. It is like autobiography. Autobiography मतलब खुद लिखता है king. Then somebody else is writing, that is biography. Biography of the king and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. Harishcharitra, written in the 7th century BCE, 7th century CE by Banabhatta, is King Harsha's biography. So King Harsha, his biography was written by Banabhatta. So everything about King Harsha is written in the book called as Harsha Charitra. So Harsha Charitra मतलब हर्षा का चरित्र, King Harsha का चरित्र. That was written by Banabhatta. So please make note of all these books written by some writers or for whom बुक वॉज रिटन. सो ये सब मैच द करेक्ट पेयर या फिर आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट ऐसे टाइप में आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. सो प्लीज मेक नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इट पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग किंग टाइम्स. सो वेन एवर वी आर रीडिंग हर्षा चरित्र, by looking at that book, while studying that book, we can study about the work of King Harsha. So we can study about the social life of the people or economic condition of that kingdom, political nature of that kingdom, also religious and cultural life of the people. So while reading this charitra, we can understand what was the situation of that period. So this is about the ancient history that was ancient historiography that was given. See, mostly ancient historiography is old documents हमारे पास है, जैसे inscriptions है या manuscripts है, उसके साथ ही हम पता लगा सकते हैं क्योंकि रिटन बुक्स अवेलेबल नहीं है. सो वी हैव टू डिसाइफर दैट, वी हैव टू डिकोड दैट. जब भी डिकोड होगा तो ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा. अगर डिकोड नहीं होगा, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी इंस्क्रिप्शंस मिला है अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, सो वी कुड नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन. बट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ माइलस्टोन. हड़प्पा का जब भी एक्सट्रावेशन हुआ, जब भी हड़प्पा का सिविलाइजेशन मिला, तो ये इंडियन हिस्ट्री का एक माइलस्टोन है कि ये बताता है कि इंडियन हिस्ट्री कितना पुराना है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द एंशिएंट हिस्टोरियोग्राफी. In the next part, we will study about the medieval period, which were the important historians in the medieval period. What are their contributions to Indian history? So if you have understood the first part, please share the video with your friends and please subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel, and thank you for watching.